नमस्कार दोस्तों, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे, राइट? सो जैसा कि आप लोग सभी जानते हो कि मैं द राउटलेज हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इंग्लिश ब्रिटेन एंड आयरलैंड को कवर करा रही हूँ इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। ठीक है, तो आज हमारा पार्ट 21 है। एंड अगर आप लोग नेट, जेआरएफ, सीयूईटी, पीजी, सेट, डी, ट्रिपल एसबी, गेट और टीजीटी, पीजीटी जैसे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे आए हो जहाँ पे आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी जिससे कि आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा आयरिश राइटिंग। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, what is the term often used to describe the upsurge in interest in Celtic myth and legend in Irish literature as it moved into the 20th century? So the correct answer is Celtic twilight. Okay, option number B is correct. Next, which poet careers spanned the end of the 19th century, the struggle for Irish nationhood, and the period between the two world wars? So W.B. Yeats. Okay, next. Which literary work by James Stephen is considered the high point of Irish whimsy? So the correct answer is The Crock of Gold. Okay, next. Who is the author of The Twilight People, a work illustrating the self-indulgent tone that gave the Celtic Twilight movement a negative reputation? सो सीमस ओ सुलिवान का ये वर्क है। ओके, एंड इसकी पब्लिशिंग डेट है 1905। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमारा दूसरा टॉपिक है W.B. Yeats. What is the key theme of Yeats' poem The Lake of Innisfree? So idealistic escape. So this poem is very very important. अगर आप लोगों ने क्लास 9th में एनसीईआरटी वाली किताब पढ़ी होगी तो ये जो पोएम है ये उसमें रिकमेंडेड है। ठीक है, और ये पोएम हमें बीए में भी पढ़ाई जाती है। सो इस पोएम से ना एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। पोएम की आपको लाइंस दे दी और उसको आइडेंटिफाई करने को बोल दिया गया। ठीक है, तो लेक ऑफ इनस्फ्री एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है जिसमें कि पोएट ये चाहता है कि वो बिल्कुल ही आइसोलेट होके एक ऐसे आइलैंड पे चला जाए जहाँ उसे सुख शांति मिले। ठीक है, तो मेरा सजेशन ये है आप लोगों को कि प्लीज जाके इस पोएम को एक बार यूट्यूब पे पढ़ लो, या फिर अगर डायरेक्ट पढ़ सकते हो तो पोएट्री फाउंडेशन पे जाके पढ़ लो, क्योंकि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये W. Yeats की पोएम। ठीक है, इन विच पोएम डज Yeats describe the Easter Rising of 1916? So of course this is Easter 1916 as you can see in the options. तो सी नंबर जो है वो काफी ज्यादा रिलेटेबल लग रहा है क्वेश्चन से। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के भी आंसर कर सकते हो अगर आंसर नहीं आ रहा हो तो। ठीक है, नेक्स्ट। The line "Things fall apart, the center cannot hold. Mere anarchy is loosed upon the world" is from which poem by Yeats? So this is from the Second Coming. ठीक है, यहाँ पे सेकेंड कमिंग की बात कर रहे हैं W.B. Yeats, और ये वाली जो लाइन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाला है। एंड ये लाइन जो है हमारे राउटलेज की भी बुक में मेंशन थी, सो इस हिसाब से ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट? नेक्स्ट, which work by W.B. Yeats discusses the themes of age and myth and contains the line that is no country for old men? So the tower. Okay, the tower. In Yeats' poem Among School Children, what role does Yeats occupy, reflecting his later concern and uncertainties? So a 60-year-old senator. Okay, next. हमारा टॉपिक है T.S. Eliot. So here is a very important line that is mentioned on the Routledge. Okay, this fragments I have showed against my runs what the thunder said. It is from Wasteland. As you all know कि Wasteland जो है वो बहुत ही ज़्यादा important poem है हमारी Yeats की।
इससे क्वेश्चन कुछ इस तरह बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इसकी पब्लिशिंग डेट कब है। दूसरा क्वेश्चन, ये पोयम कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। इस पोयम के पार्ट्स क्या क्या है, उसका आइडेंटिफिकेशन बेस्ड। ठीक है, इस पोयम की थीम क्या है वो आइडेंटिफाई करना, इस पोयम के कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, सो ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। एंड हाँ, इस पोयम में किस किस माइथोलॉजिकल फिगर का यूज हुआ है वो, तो मैंने अभी जितने भी चीज बोले ना उसको एक की पॉइंट में लिख लो, बाद में वीडियो खत्म होने के बाद उसको प्रॉपर जाके सर्च करके नोट्स में मेंशन कर लेना। ठीक है, what is the central theme of T.S. Eliot poem The Wasteland? So the cultural and spiritual desolation. Okay, next. Which poem by Eliot marks a significant break from romantic poetry and uses a technique similar to the stream of consciousness? So the love song of J. Alfred Prufrock. How does T.S. Eliot use of rhythm and meter differ from the concept of free verse? So he reject free verse and maintaining traditional structure. ठीक है, उन्होंने ना फ्री वर्स को रिजेक्ट करा था एंड ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करा था। ठीक है, नेक्स्ट। In the poem Marina, what is the sequence of images used by Eliot mean to evoke? So here is the correct answer, religious awakening. Okay, option number C is correct. Next, the language note, modernist poetic syntax. This is our next topic. So what genre does W.H. Davis, the autobiography of a super tramp, belong to? So picaresque. पिकारेक्स मैंने अपनी एमएच अब्राहम्स की सीरीज में बहुत अच्छे से समझाया है, तो प्लीज आप लोग वो जाके एक बार देख लो क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये कि मैंने पूरी किताब को एमसीक्यूज के फॉर्म में कवर कर दिया है आप लोगों के लिए, तो अगर आप लोग उसको नहीं देख रहे हो तो आप बेटा बहुत बड़े लॉस में हो, प्लीज जाके उसको देख लो क्योंकि फायदा आप लोग का ही है। ठीक है, मैंने तो वीडियो बना के रख दी है, बस आप लोगों को जाके एक बार चेकआउट करना है, अच्छे से पूरी प्लेलिस्ट को कवर करो, बहुत 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 अच्छे मार्क्स आएंगे आप लोगों को। ठीक है, next. Which poem by W.H. Davis affirms countryside and rural values? So leisure. Okay. 30s poet. What major political event in 1930s drew a response from writers including W.H. Auden? So here is our correct answer, the Spanish Civil War. Okay, next. In the poem Spain, W.H. Auden identified as the force of good what? So the Republican army supported by ordinary people. Option number C is correct. Next. Which group of poets is associated with a style and viewpoint similar to W.H. Auden? So the Auden group is the correct answer. Right. Next. What is a characteristic feature of 30s poetry as highlighted by Louis Mcqs? So, use of clear ordinary language and popular forms. Okay, next. In the poem 1st September 1939, what does W.H. Auden describe the 1930s as? So, a dishonest and low decade. ठीक है, इस पोएम में उन्होंने 1930 के डिकेड को डिसऑनेस्ट और लो डिकेड बोला है W.H. Auden ने। ठीक है, नेक्स्ट। Scottish and Welsh poetry is our next topic. So the question is, who led the revival of Gaelic speaking and writing in the 20th century? So Sorley MacLean is the correct answer here. Next. Which poet attempted to create a Scottish poetic language based on lowlands, Lowlands in the 1920s? So Hugh MacDiarmid. What is the best known work of Hugh? So a drunk man looks at the thistle. Next. Which Scottish poet is remembered for translating Kafka into English? So Edwin Muir. In Edwin Muir's poem The Horses, what is described as happening a year after the war?
So the coming of strange horses. Okay, this one is correct. Next. Which poet wrote in English but used both the Highlands and Edinburgh for inspiration? So Norman Mcqs is the correct answer here. Next. What event gave a significant boost to Welsh writing in English in the 19th century? So the Education Act of 1870. Okay, next. Which Welsh poet is noted for the radio drama Under Milkwood Tree? So you can see here that Dylan Thomas is the correct answer. Okay. So आज हमारा जो 21 पार्ट है वो यहाँ पे खत्म होता है. ठीक है, कल हम लोग मॉडर्न पोइट्री सॉरी मॉडर्न ड्रामा करेंगे टिल 1945 तक. एंड उसके ऐसे ऐसे करके हम लोग राउटलेज की बुक अब बस खत्म होने ही वाली है. कुछ दिनों तक ये सीरीज चलेगी, फिर ये प्लेलिस्ट जो है वो एंड हो जाएगी. फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी इंडियन लिटरेचर. ठीक है, इंडियन लिटरेचर की भी मैं एक अच्छी सी बुक उठाऊंगी और आप लोग मुझे बताना कि आप लोग को जो है उस बुक से एमसीक्यूज के फॉर्म में वीडियो चाहिए या फिर नोट्स के फॉर्म में. ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं उसी हिसाब से आप लोगों तक वीडियो को पहुंचाऊंगी. ठीक है, एंड हाँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो. एंड इस क्वेश्चन का आंसर मुझे याद से कर देना. जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है, प्लीज आपसे निवेदन है कि मुझे बताओ कि आप लोग को इंडियन लिटरेचर पे क्या नोट चाहिए या फिर एमसीक्यूज चाहिए. ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी. अगर ना भी आए तो प्लीज लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना. एंड हाँ, मुझसे कोई भी गलती होगी तो मुझे माफ करना. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.